Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Hello everybody, join the lecture. Hello everybody, I hope I am audible to you. Hello everybody, I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. So we have seen in the previous lecture, so we have seen the introduction of your lipids. Okay, so we were started with our lipids chapter, and we have seen the what do you mean by lipids, what do you mean by lipids, what do you mean by lipids, classification of lipids, what do you mean by simple lipids, complex lipids, and then we have seen the derived lipids. Okay, so after that we have seen the what is meant by triacyl glycerol, what are the different types of saturated fatty acids, what do you mean by unsaturated fatty acids, so what do you mean by essential fatty acids. So remember unsaturated fatty acids. So unsaturated fatty acids, so out of these two fatty acids known as a linoleic acid and linolenic acid, they are known as a essential fatty acids. Okay, after that we have seen the importance of different fatty acids. Okay, occurrence and characteristics of important fatty acids we have seen. After that we have seen the composition of different oils and fats, so in terms of saturation, monounsaturation and polyunsaturation we have seen. We have also seen the nomenclature, we have also seen the nomenclature of fatty acids, we have also seen the isomerism of fatty acids. So remember linolenic acid, linoleic acid, they are known as a essential fatty acid because they are not biosynthesized in the human being, and the reason for that is nothing but the we don't have any enzyme that can introduce double bond beyond the curve number 10 or 9, right? So we have seen that, right? Cyclic fatty acid also we have seen. Now what are the functions of fatty acid? So we have yesterday seen, but I would like to repeat it. So functions of essential fatty acids. So what are the functions of essential fatty acids? So first of all, they are the structural component of your tissues. They are the structural component of tissue. Then again, polyunsaturated fatty acids, they are found in the gonadal organs like testes, then prostate gland, etc. Then essential fatty acids are very important for the synthesis of prostaglandins, leukotrienes and other chemicals, other inflammatory chemicals. They are the structural component of mitochondrial membrane of cell. तो essential fatty acid the वो structural component होता है mitochondrial membrane का. Again polyunsaturated fatty acid decreases the serum cholesterol level. So polyunsaturated fatty acid, why I was giving more emphasis, more focus on that part. Polyunsaturated fatty acids, so those oil which has a polyunsaturated fatty acids in a more amount, they will control your cholesterol.
So polyunsaturated fatty acids, they will decrease the blood level of cholesterol. Essential fatty acid increases the blood clotting time and also fibrinolytic activity. Essential fatty acid prevent the formation of fatty liver. तो फैटी लिवर एक डिसीज होता है, तो इसेंशियल फैटी एसिड्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सीन द DHA. DHA is nothing but it is a precursor for linoleic acid and increases the electrical response to photoreceptor for illumination. तो आईज में इंपॉर्टेंट होता है आईज. तो DHA is very important for your eyes. DHA is also present in the brain and responsible for the required for the development of brain and retina. It is supplied via milk and placenta it is supplied via milk and placenta to the baby from mother. Alcohols in the lipids we have seen. So glycerol is the most common alcohol. So to detect the glycerol, there is one test known as a acryloin test. So acryloin test is used to determine, or acryloin test is used to measure the glycerol. It is used to detect the presence of glycerol in the different solution, right? So that is the test. When glycerol है, it is alcohol. So glycerol, it is dehydrated with the heat and potassium hydrogen sulfate. So what will happen? There is a formation of aldehyde, acrylyl aldehyde, known as a acryloin, and this acryloin is detected. So that's it. That's why it is known as acryloin test. Okay. Then cholesterol is also there. Cholesterol is also a steroid structure having alcohol. Cetyl alcohol means higher alcohol. जैसे यहाँ पे है ना, जैसे palmitic acid होता है C16, तो 16 carbon number having alcohol, 16 carbon alcohol, cetyl alcohol, so higher alcohol. Then unsaturated alcohols present in the lipids. Jैसे there is one alcohol known as a phytol. So there is a phytol. Phytol is present in the chlorophyll. Then lycophyll. In the lycophyll also polyunsaturated alcohol is also there. Lycophyll is a polyunsaturated alcohol in the tomato, and then sphingosine is also a alcohol, amino alcohol. Different types of alcohol present in the fatty acid, right? Different type of alcohol in the fatty acid. Now triglyceride क्या होता है? Triglyceride means triacyl glycerol, also known as a triacyl glycerol. So insoluble in the water and soluble in the non-polar solvent. Okay, and they are non-polar in character. ये क्या है? Water insoluble होते हैं, non-polar होते हैं, and solvent, organic solvent में soluble होते हैं. Commonly known as a neutral fat. They are known as a neutral fat. They act as a storage fuel. Okay, so lipid will serve as a 20% fuel in the male and 25% in the female by weight. 25% in woman by weight, 20% in the male by weight. Okay. Now lipid oxidation और lipid peroxidation in vivo. In vivo मतलब क्या? In vivo मतलब inside the body. So lipid peroxidation, so oxidation of lipid peroxidation in vivo. Okay, so that result in the generation of free radical. अगर lipid का oxidation हो गया आपके body में in vivo, that result in the formation of free radical. So lipid peroxidation in the vivo, it produces the peroxide radicals. Now this radical can damage your tissues, can cause inflammatory disease, and these radicals are responsible for the cancer, or again atherosclerosis. So lipid peroxidation अगर body में होता है, if there is a formation of peroxides radicals due to oxidation of lipids, so that can cause damage to your tissue, that can cause inflammatory disease, that can cause cancer, that can cause atherosclerosis. Now this is not happens in body because fortunately God is gifted us very nice antioxidants. ये normally होता नहीं है body में, अगर हो जाए तो कैंसर होता है. Normally it is prevented. Fortunately we have been gifted with the antioxidant. We have been gifted with the antioxidant like vitamin E, superoxide dismutase. So these two antioxidants, they prevent the lipid peroxidation in vivo. तो जो antioxidant बोलते हैं ना, antioxidant आजकल बहुत चलता है, इसमें antioxidant properties है. तो antioxidant क्यों important है? Because these antioxidants prevent the lipid peroxidation of, they will prevent the peroxidation or oxidation of lipid in the body,
So fortunately we have antioxidant in the body, that is vitamin E and superoxide dismutase, right? Now properties of lipids, hydrolysis हो सकता है लिपिड का. So on hydrolysis lipids will give you, है ना, lipids will give you fatty acid and glycerol. So either by enzymatic hydrolysis or, है ना, hydrolysis of lipids, okay, that can be catalyzed by lipase enzyme. Lipase मतलब क्या, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम. तो lipase enzyme will hydrolyze the lipids and convert into fatty acid and glycerol, है ना. कि what is the hydrolysis product of lipid? Fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol. Then saponification. Saponification means what? So hydrolysis of lipids. Hydrolysis of lipids or fat, okay, by using alkali. अगर आपने बेस, है ना, बेस जो होता है, अल्कली जो होता है, तो if you hydrolyze the alkali, if you hydrolyze the fatty acid by alkali, if you hydrolyze the oil by alkali, that is known as a, an alkali hydrolysis of lipids, okay, that result in the production of glycerol and soap, the sodium salt of fatty acid known as a soap. So this reaction is known as a saponification. So reactions of fatty acids with the alkali known as a saponification. Okay? Now rancidity मतलब क्या? Very very important. हम rancidity GPAT 24 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Rancidity is nothing but the deterioration of fats and oil, है ना. जब आपका fats and oil लिपिड जो है आपका rancid बन जाता है, खराब होता है, तो rancidity means what? Deterioration of fats and oil resulting into foul, rancid on the rest. मतलब upon storage fats and oils, mostly those fats and oils having not fat oils having double bonds, unsaturated oils are mostly prone to the rancidity. Rancidity मतलब क्या है? Deterioration of fats and oils resulting into foul odor, है ना, गंदा सा स्मेल आएगा, foul odor, and they become rancid upon the storage. So fats and oil containing unsaturated fatty acid, they are more liable for the rancidity. जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे वो ज़्यादा rancid बनेगा. Fats and oil having double bonds, unsaturation, they result in the rancidity. Okay, they are more prone to rancidity. Next, the rancidity is of two type. Rancidity दो टाइप का होता है. पहला होता है hydrolytic rancidity. So rancidity is of two type. First one is a hydrolytic rancidity. Rancidity दो टाइप का होता है. पहला होता है hydrolytic rancidity. It is due to the hydrolysis of fats and oil due to the bacterial enzyme. बैक्टीरियल ग्रोथ होगा ऑयल में और बैक्टीरियल एंजाइम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, फैट्स एंड ऑयल का. दैट इज नोन एज द हाइड्रोलाइटिक रेंसिटी. हाइड्रोलाइटिक रेंसिटी इज ड्यू टू द okay hydrolysis of fats and oil by bacterial enzyme. Another type of rancidity is nothing but the oxidative rancidity. Now this is due to the oxidation, as the name indicate. इसके नाम में रखा है ऑक्सीडेटिव रेंसिटी, मतलब ऑक्सीडेशन के कारण होता है. Due to the oxidation of unsaturated fatty acid. So oxidative rancidity is due to the oxidation of unsaturated fatty acid. Rancidity मतलब क्या है? Deterioration of fats and oil. Resulting into a foul odor and rancid. It become a rancid upon storage. So mostly fats and oil having double bond or unsaturation, they are more liable for rancidity. तो दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज हाइड्रोलाइटिक रेंसिटी, दैट इज ड्यू टू द enzymatic degradation due to bacterial enzyme, है ना. ऑक्सीडेटिव रेंसिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ unsaturated fatty acids, है ना. ऑक्सीडेशन ऑफ fatty acids leads to formation of peroxides, है ना. Peroxide value indicate the oxidative rancidity. Now this results in the unpleasant product. जब ऑक्सीडेटिव रेंसिटी होता है उसमें क्या बनता है? ये प्रोडक्ट बनते हैं, है ना. ड्यू टू ऑक्सीडेटिव रेंसिटी और ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, व्हाट विल हैपन? देयर इज अ रिलीज ऑफ peroxides, that is a byproduct. So what happens? So unpleasant product such as dicarboxylic acid, aldehydes and ketones, they are formed in the oil. तो आप देखो आपका ऑयल अगर बहुत टाइम पे अगर आपने ऐसे रखा है ना, if you keep your oil, है ना, if you keep your oil for long time, it will become a rancid. वो rancid बनता है. क्यों rancid बनता है? That result in the unpleasant product, that result in the formation of
डायकार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्डिहाइड्स अँड कीटोन. नाउ जो रॅन्सिड ऑइल होतं, रॅन्सिड ऑइल मराठीमध्ये त्याला आपण खवटपणा है ना, खवटपणा है ना, ऑइल खवट झालं किंवा ऑइल खराब झालं त्याला काय म्हणायचं, रॅन्सिड. सो that is due to the oxidation of unsaturated fatty acid in the oil that result in the production of dicarboxylic acid, aldehydes and ketone. Now odor जो है उसका foul odor is because of the aldehyde and ketones. जो odor बनता है rancid oil का, जो odor आता है odor, rancid oil smell है ना, rancid oil कैसा smell होता है, गंदा smell होता है. So rancid oil will smell a bad. So bad smell of oil is because of the production of aldehyde and ketone. Remove. नाउ टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ ऑयल. आपको कैसे पता आपका जो लिपिड है वो प्योर है या नहीं. सो व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल. सो फर्स्ट वन इज द आयोडीन वैल्यू. पहला टेस्ट क्या है, आयोडीन वैल्यू और आयोडीन नंबर. तो आयोडीन नंबर और आयोडीन वैल्यू, आयोडीन नंबर और आयोडीन वैल्यू. नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन absorbed by 100 ग्राम ऑफ लिपिड और फैट. Number of grams of iodine absorbed by 100 gram of fats and oil. Now useful to know the relative unsaturation in the fat and oil. Useful to know relative unsaturation in the fat and oil. मतलब क्या कि जिस भी लिपिड में डबल बॉन्ड है, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक एक आयोडीन का मॉलिक्यूल जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट. सो आयोडीन नंबर मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन absorbed by 100 gram of fat and oil. Now why? Because iodine will form a bond at a double bond. जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा वहाँ पे एक आयोडीन मॉलिक्यूल जाके अटक जाएगा. So iodine will form a bond with the fatty acid where there is a existence of double bond, right? So that's why iodine number indicate the relative unsaturation in the fat, which is directly proportional to the unsaturated fatty acid. तो आपके लिपिड में, ऑयल में या फैट में जितने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उतना ज़्यादा उसका आयोडीन नंबर है. सो मोर विल बी द आयोडीन नंबर, मोर विल बी द अनसैचुरेशन इन द फैट. लेस विल बी द आयोडीन नंबर ऑफ लिपिड, लेस विल बी द अनसैचुरेशन इन द फैट. जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर रहेगा उतना ज़्यादा उसका डबल बॉन्ड्स रहेगा. ठीक है, मतलब उसका मतलब है कि डबल बॉन्ड ज़्यादा है. तो आयोडीन नंबर इज द लोवेस्ट इन केस ऑफ कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल में आयोडीन नंबर कम होता है. आयोडीन नंबर इज लोवेस्ट इन केस ऑफ कोकोनट ऑयल एंड इट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ लिंसीड ऑयल. लिंसीड ऑयल में सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड. तो कोकोनट एज अ लेस आयोडीन नंबर, लोअर आयोडीन नंबर, एंड लिंसीड ऑयल एज अ हायर आयोडीन नंबर. तो यहाँ पे क्वेश्चन इसके ऊपर 2-3 बार आ चुका है, आयोडीन नंबर. आयोडीन नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्सॉर्ब बाय द 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल that indicate the relative unsaturation, and it is directly proportional to the content of unsaturated fatty acid. So iodine number is lowest for the coconut oil and it is highest for the linseed oil. Next is the saponification number. पहला था iodine number, next one is the saponification number. So what is saponification number? Number of milligram of potassium hydroxide. Number of milligram of potassium hydroxide that is required to hydrolyze the 1 gram of fat. Required to hydrolyze or saponify. So number of milligram of KOH is required to saponify or hydrolyze the 1 gram of fat or oil. That is known as the saponification number. So number of milligram, कितना मिलीग्राम लग रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का to hydrolyze or to saponify the 1 gram of fat and oil. So it is a measure of average molecular size of fatty acid. तो saponification number आपको क्या देगा? It is a measure of average molecular size in the fatty acid. फैटी एसिड कितना लंबा है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से. तो एवरेज, इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज मोलिकुलर साइज ऑफ फैटी एसिड. ओके, द वैल्यू इज हायर फॉर फैट्स एंड लोअर फॉर लिपिड्स. तो वैल्यू इज हायर फॉर फैट्स कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. फैट में क्या होता है, मोलिकुलर साइज जो फैटी एसिड का वो ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, राइट. सैपोनिफिकेशन नंबर 1 मिलीग्राम, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई to hydrolyze the fat. It is a measure of average molecular size in the fatty acid. It is the value is higher for fats containing short chain fatty acids. So you can see the saponification reaction in the chart. यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑयल. तो
addition of potassium hydroxide or sodium hydroxide. So addition of alkali to the lipids will give you soap. So that is nothing but the release of glycerol. Glycerol release होगा, and ये जो fatty acid है R1, R2, R3, they will become a sodium salt of fatty acid. That is known as the soaps. The reaction is known as the saponification, and the product formed in this is a soap. That's why it is known as the saponification number. Saponification number means it is a milligram of KOH required to hydrolyze or to saponify the 1 gram of fat and oil. That will give you a average molecular size of the fatty acid. Okay. Iodine number क्या है? What is the significance of iodine number? Question इसके ऊपर 2-3 बार आ चुका है. Significance of iodine number is nothing but to know the unsaturation in the fatty acid. Saponification number का रोल क्या है? What is the significance of saponification number? To know the molecular size of fatty acid. Question आ चुके हैं इसके. Next one is Richard Michel number. Very very important. इसके ऊपर भी 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है. Richard Michel number, RM number. Richard Michel number, RM number. Question इसके ऊपर आ चुका है RM number. So what is RM number? Again it is a 0.1 normal potassium hydroxide. 0.1 normal potassium hydroxide required to completely neutralize. Neutralize what? Neutralize soluble fatty acid, or volatile fatty acid. Volatile fatty acid, volatile fatty acid. Richard Michel number is a number of milligram of KOH or potassium hydroxide required to completely neutralize the soluble fatty acid or volatile fatty acid distilled from 5 gram of fat. RM number, 0.1 normal KOH required to neutralize the volatile fatty acid obtained or distilled from 5 gram of fat. RM number, Richard Michel number, very very important है ना. RM number is useful in the testing of प्योरिटी ऑफ बटर, है ना. मैं तो वो नमकीन बटर का प्योरिटी कैसे चेक करना है? आरएम नंबर. तो आरएम नंबर, क्योंकि बटर में क्या होता है, बट इन द बटर यू हैव वोलेटाइल फैटी एसिड्स. सो रिचर्ड मिशेल नंबर, आरएम नंबर इज अ यूजफुल इन द मेजरमेंट ऑफ और टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ बटर. क्वेश्चन आ चुका है, विच टेस्ट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर, है ना. सो इट इज यूज द आरएम नंबर इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर. ओके, बिकॉज in this number of milligram of 0.1 normal KOH required to complete neutralize the volatile fatty acid distilled from 5 gram of fat. तो जो fatty acid आया है, volatile fatty acid, neutralize the soluble volatile fatty acid distilled from 5 gram of fat. तो soluble fatty acid, volatile fatty acid किसमें होता है? volatile fatty acid किसमें होता है? बटर में होता है. So that's why it is useful for the testing of purity of butter. Now in case of butter, RM number कितना होना चाहिए? 25 to 30. In case of butter, RM number should be 25 to 30. So that means the butter is pure. It consists of volatile fatty acid like butyric acid and capric acid. तो बटर में क्या होता है? बटर में ब्यूटारिक एसिड होता है, कैप्रियोक एसिड होता है. which are volatile. butyric acid, caprioc acid, caprilic acid. So they are the volatile fatty acid. Okay, and RM number is used to check the purity of butter. So it is a less than 1 for edible oils. RM number is less than 1 for edible oils. आप जो ऑयल खाते हो उसके लिए RM नंबर लेस देन 1 होता है, राइट. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पार्ट विल सी एसिड नंबर. एसिड नंबर में मतलब क्या है? नेक्स्ट पार्ट इज एसिड नंबर. एसिड नंबर, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स फॉर फैट्स एंड ऑयल. एसिड नंबर, तो milligram of KOH required to neutralize the completely free fatty acid present in the 1 gram of fat. So number of milligram of KOH required to neutralize the free fatty acid present in the 1 gram of fat or oil, है ना. So number of milligram of KOH potassium hydroxide required to neutralize the completely free fatty acid present in the 1 gram of fat. And remember it is an indicator for rancidity again. और GPAT 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है. Following number is a indicator for rancidity. Following is a indicator for rancidity. और उसमें ऑप्शन था RM नंबर, है ना, acetyl वैल्यू, एसिड नंबर, आयोडीन नंबर. तो आयोडीन नंबर, एसिड नंबर नहीं, एसिड नंबर इज इंडिकेटर फॉर rancidity, है ना. GPAT 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है, रिमेंबर. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
part we are going to discuss. So acid number means what? Number of milligram of KOH required to neutralize the 3 fatty acid present in the 1 gram of fat, right? So it indicates the acidity, and this question was there in the GPAT 24. इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं. Next one is nothing but the Polanski number. Polanski number. Next one is nothing but the Polanski number. So milligram of 0.1 normal KOH required to neutralize the soluble fatty acid, which is a non-volatile. Soluble fatty acid which is a non-volatile from 5 gram of fats and oil. Polanski number और रिचर्ड मिशेल नंबर में एक ही डिफरेंस है. क्या? RM number means milligram of KOH required to neutralize the soluble volatile fatty acid. Soluble volatile fatty acid distilled from 5 gram of fat. Whereas Polanski number में क्या है? Polanski number में 0.1 milligram of KOH and 0.1 normal KOH required to neutralize the insoluble fatty acid. Insoluble, यहाँ पे देखो insoluble है, यहाँ पे insoluble fatty acid which is non volatile from 5 gram of fat. इसके ऊपर भी GPAT में क्वेश्चन आ चुका है, right? Polanski number. Now next one is a acetyl number. Acetyl number. What is acetyl number? So number of milligram of KOH required to neutralize the acetic acid obtained by saponification of 1 gram of fat after it has been acetylated. मतलब क्या है कि फैटी एसिड में क्या है कि OH ग्रुप रहता है, तो milligram of KOH required to neutralize the acetic acid obtained after the saponification of 1 gram of fat. It has been acetylated. मतलब क्या, जब saponification होता है तो है ना, जिसमें फ्री OH ग्रुप होता है, those fatty acid which has a free OH group, so that will give you acetic acid, right? That needs to acetylation by using acetic anhydride. So acetyl number is a number of milligram of KOH required to neutralize the acetic acid or obtained by saponification of 1 gram of fat after it has been acetylated. मतलब क्या, जो लिपिड है उसको एसिटिक एनाहाइड्रेट से ट्रीट करना है आपको, जो फ्री OH ग्रुप है वो एसिटाइलेट हो जाएंगे एंड बाद में आपको ऐड करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो नंबर ऑफ milligrams of KOH required to neutralize the acetic acid obtained after saponification of 1 gram of fat, it has been acetylated. Now what is the significance of this acetyl number? So acetyl number is the measure of number of OH group present in the fatty acid. Number of OH group present in the fatty acid. So it is a measure of number of OH group present in the fatty acid, right? Next आता है अपना point phospholipids. Next point आता है आपका phospholipids. कौन सा लिपिड? Phospholipid. Phospholipids, they are the, है ना, we have seen it is a, है ना, it is a complex lipids. So they are the complex lipid containing a phosphoric acid. अब इसमें क्या आता है? phosphoric acid होता है. Complex lipid containing phosphoric acid and there is additional nitrogenous base and alcohol. So phospholipids मतलब क्या? यहाँ पे nitrogenous base रहेगा, है ना, phosphoric acid रहेगा and alcohol रहेगा. Fatty acid तो है. So in the phospholipid, it is a complex lipid containing phosphoric acid. In addition to that fatty acid, there is a nitrogenous base and alcohol, known as the phospholipids. So that is a type of complex lipid we have seen. Now उसमें आता है पहला glycerophospholipid. We have seen the phospholipid in short, but in detail now. Glycerophospholipid. So glycerophospholipid. तो नाम क्या है भाई? Glycerophospholipid. What will happen? Here alcohol is a glycerol. Glycerophospholipid means what? There is alcohol known as a glycerol. Glycerophospholipid. They are the major lipid that occurs in the biological membrane and they consist of a glycerol 3-phosphate, which is esterified with the C1 and C2 with the saturated and then unsaturated fatty acid respectively. Glycerophospholipid में क्या रहता है कि they are the major lipids which form a biological membrane. इसमें ग्लिसरॉल 3-phosphate रहता है, मतलब थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन फ्री है. फर्स्ट कार्बन में सैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा, सेकंड कार्बन में अनसैचुरेटेड रहेगा. सो आर द लिपिड्स दैट ऑकर्स इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल 3-phosphate esterified at a C1 C2 by saturated and non-saturated fatty acid respectively. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फेटिक एसिड.
फॉस्फेटैडिक एसिड. फॉस्फेटैडिक एसिड, so फॉस्फेटैडिक एसिड क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड इट इज अ इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड. फॉस्फेटैडिक एसिड क्या है? सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड होता है एंड इट इज अ इंटरमीडिएट इन द ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के ड्यूरिंग ये इंटरमीडिएट फॉस्फोलिपिड बनता है फॉस्फेटैडिक एसिड. Phosphatidic acid is the simplest phospholipid that is intermediate in the synthesis of triglyceride and phospholipid. जब phospholipid triglyceride जब बनता है तो उसमें ये phosphatidic acid ऐसे intermediate compound बनता है. Next is a lecithin. Next is a lecithin. तो lecithin क्या है? Again it is a phospholipid known as a phosphatidyl choline. तो phosphatidyl choline ना, इसमें क्या है? phosphatidyl choline ना, phosphatidic acid. In addition to that, there is a choline. So it is the body's choline storage. Choline क्या है? Nitrogenous base होता है. What is choline? Choline is a nitrogenous base. So lecithin, phosphatidyl choline, it is a storage form of your body's choline. Next आता है देखो डायपल्मेटोइल lecithin. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है डायपल्मेटोइल lecithin ना. ये डायपल्मेटोइल lecithin, lecithin का ही एक टाइप है. It is a type of lecithin known as a dipalmitoyl lecithin. A dipalmitoyl lecithin. It is found in the lungs. Dipalmitoyl lecithin क्या है? It is a phospholipid present in the lungs. क्वेश्चन आ चुका है. It is a dipalmitoyl lecithin is found in the lungs and it acts as a surface active agent. It acts as a surfactant. It is a surface active agent in the lungs and prevent the adherence of inner surface of lung while expiration and inspiration. मतलब ये lungs में it will reduce the surface tension. In the lungs, in the alveoli, it will reduce the surface tension. और इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, so which surfactant is found in the lungs? So dipalmitoyl lecithin. Surfactant और surface active agent found in the lungs. तो lungs में alveoli में तो dipalmitoyl lecithin. Dipalmitoyl lecithin is a surface active agent present in the lungs and alveoli which reduces the surface tension, which prevents the over distension of lungs. Now absence of this dipalmitoyl lecithin, अगर नहीं है dipalmitoyl lecithin, अगर नहीं है, absence of dipalmitoyl lecithin will cause respiratory distress syndrome in the infants. Respiratory distress syndrome in the infants, and it is a disorder characterized by absence of dipalmitoyl lecithin surfactant in the lung. Absence of this dipalmitoyl lecithin will suffer a respiratory distress syndrome, RDS, है ना, respiratory distress syndrome in the children, in the infants. That is due to the absence of dipalmitoyl lecithin. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Now दूसरा टाइप होता है lecithin में lysolecithin. In the lecithin, first one is the dipalmitoyl lecithin, second is the lysolecithin. It is formed by removal of fatty acid either C1 C2 of the lecithin. मतलब जो lecithin में C1 C2 है उसको एक में से एक रिमूव करना. तो इन द lecithin, तो in the C1 and C2 you have fatty acids. So removal of that fatty acids leads to lysolecithin. We'll see the structure of these also, don't worry. Next आता है sapellins. lecithin हो गया, अभी sapellins. So sapellins are known as a phosphatidyl ethanolamine. Lecithins are known as a phosphatidyl ethanolamines. Phosphatidyl ethanolamines. So in that phosphatidyl inositol. So it is a stereoisomer of myoinositol. तो ये क्या है? myoinositol is a phospholipid present in the muscle. myoinositol क्या है? phospholipid present in the muscle. And इसका stereoisomer क्या है? phosphatidyl inositol. So very important component of cell membrane, and it is a secondary messenger. Very important component of cell membrane. It is a secondary messenger. Drugs mediate their actions by activating the phosphatidyl inositol. PI3, IP3, phosphatidyl inositol. phosphatidyl serine. तो इसमें क्या है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड प्लस सेरीन, phosphatidyl serine. नेक्स्ट होता है स्पिंगोमाइलिन्स. स्पिंगोमाइलिन्स मतलब स्पिंगोसाइन क्या है? स्पिंगोसाइन इज अ अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट इन द स्पिंगोफॉस्फोलिपिड एंड इट डज नॉट कंटेन एनी ग्लिसरॉल. तो स्पिंगोमाइलिन्स, ठीक है. नेक्स्ट आता है
Sphingosine is attached by amide linkage to the fatty acid to produce a ceramide. Ceramide क्या है? It is a kind of sphingomide. Ceramide किसमें होता है? It is a secondary messenger for apoptosis. Apoptosis मतलब क्या? Apoptosis means programmed cell death. Apoptosis मतलब programmed cell death. Programmed cell death. Programmed cell death. Ceramide is a secondary messenger for apoptosis. It also regulates the skin's water permeability. आपके स्किन का वाटर परमिबिलिटी को रेगुलेट करता है सेरामाइड. तो सेपेलिन में आता है फॉस्फेटेडिल इथेनोलामाइन, उसमें फॉस्फेटेडिल इनस्टॉल विच इज स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ मायोइनस्टॉल एंड इट इज सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एक्शन ऑफ ड्रग्स. फॉस्फेटेडिल सेरीन मतलब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड प्लस सेरीन. स्पिंगोमाइलिन मतलब सिंगोसाइन. उसमें स्पिंगोमाइलिन मतलब क्या है? वो फॉस्फोलिपिड है. उसमें स्पिंगोसाइन क्या रहेगा? अल्कोहल, विच इज अमाइन अल्कोहल है ना. एंड स्पिंगोसाइन when attached to a amide, sphingosine attached to a amide linkage, attached by amide linkage to a fatty acid है ना. amide linkage है तो उसको बोलेंगे ceramide. ceramide is again secondary messenger for apoptosis and regulate the skin water permeability. कार्डियोलिपिन, देखो कार्डियोलिपिन कौन सा लिपिन? कार्डियोलिपिन. तो इट इज अ कार्डियोलिपिन, नाम जैसे कार्डियो मतलब क्या? फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम हार्ट मसल. फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम heart muscle and consist of 2 molecules of phosphoric acid held by additional glycerol through a phosphate group. Cardiolipin में क्या है? First it was isolated from heart. It is a phospholipid isolated from heart and consist of 2 phosphatidic acid जो देखा ना phosphatidic acid additionally held by glycerol. मतलब 2 phosphatidic acid joined by glycerol through a phosphate group. These are only phospholipid which has an antigenic property. मतलब cardiolipin is the only phospholipid which has an antigenic property. Cardiolipin are the only phospholipid which has an antigenic, मतलब it can act as an antigen, है ना, राइट. देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है. फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड पहले देखें. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? तो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर वगैरह है, तो फॉस्फोलिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. They are the component of cell membrane and they regulate the membrane permeability. Main conformation hub for electron transport chain of a cellular respiration. मतलब ETC जो है electron transport chain और cellular respiration, that is a main conformation. It is a main conformation hub for ETC and cellular respiration. Then fatty liver क्या है? Accumulation of lipids और accumulation of फैट इन द लीवर, फैटी लीवर. मोस्टली ये अल्कोहलिक पेशेंट में होता है. तो दोज हु आर हैविंग अल्कोहलिज्म, दोज हु आर एडिक्टेड टू अल्कोहल, मतलब जो बेवड़े लोग होते हैं उसमें ये फैटी लीवर होता है ना. तो फैटी लीवर, एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर, सो दैट इज प्रिवेंटेड बाय फॉस्फोलिपिड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लिपोप्रोटीक फैक्टर. Phospholipids are also known as the lipoprotein factor. Why? Because they prevent the डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर. फैटी लिवर डेवलपमेंट होने से बचाता है फॉस्फोलिपिड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. also known as lipoprotein factor, right? Now again phospholipids are responsible for the absorption of fat. They are the precursor for biosynthesis of prostaglandins. and PG synthesis कब होता है? when there is damage to a cell membrane, there is release of phospholipids from damaged cell membrane, and that phospholipids, from that there is a release of arachidonic acid which is broken down, converted into prostaglandin. So they are the precursor for synthesis of prostaglandins, है ना. बाकी और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड कौन से है? अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. सो ग्लाइकोलिपिड्स मतलब ग्लाइको मतलब क्या? शुगर. तो दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू. एग्जांपल इज सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स. बाद में लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? It is a macromolecular complex of lipid with the protein. Macromolecular complexes of lipid and protein. So complex of lipid and protein known as a lipoprotein, and a complex of lipid and protein known as a
right? So lipoproteins, so they are the macromolecular complex of lipid with the protein, and there are different types. इससे होता है HDL. HDL मतलब क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. HDL means high density lipoprotein. So HDL is also known as a good cholesterol in a rough language, in a non-standard language. HDL को क्या बोलते हैं अपन? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना. अक्षय कुमार जी आते हैं, डॉक्टर अक्षय कुमार, डॉक्टर अक्षय कुमार आपको बोलते हैं इसमें है गुड कोलेस्ट्रॉल. तो गुड कोलेस्ट्रॉल उनको पूछो उसको क्या बोलते हैं. तो HDL क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन का काम होता है टू कैरी द लिपिड. सो आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन. तो लिपोप्रोटीन का है ना टाइप होता है HDL इज अ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. एंड देयर इज अ LDL. LDL मतलब क्या? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन also known as a bad cholesterol, and increase the level of LDL is associated with the highest risk of arteriosclerosis. मतलब आपका कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकता है ना, ड्यू टू द LDL. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन increase the level of plasma LDL is related with the risk of arteriosclerosis, है ना. क्योंकि LDL में क्या होता है? मोस्टली इट विल कैरी द कोलेस्ट्रॉल. लिपोप्रोटीन, what is the role of lipoproteins? टू ट्रांसपोर्ट द लिपिड. लिपिड का स्टोर करना, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना किस काम में? लिपोप्रोटीन का. उसमें टाइप्स होते हैं LDL, HDL, VLDL, IDL, है ना, काइलोमाइक्रॉन्स, है ना. सो HDL will carry mostly the fatty acid, not a cholesterol, but LDL will carry the cholesterol. LDL क्या है? low density lipoprotein depending upon their sedimentation coefficient, they are called as a density lipoprotein, है ना. आइडियल मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन. LDL मतलब लो डेंसिटी, HDL मतलब हाई डेंसिटी, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना. LDL and VLDL they are prone for the arteriosclerosis. VLDL and LDL. Then chylomicrons. ठीक है. स्टेरॉइड्स में आता है कोलेस्टेरॉल. स्टेरॉइड्स में आता है कोलेस्टेरॉल. तो स्टेरॉइड्स are also important lipids. Steroids are also important lipids. So cholesterol is the most abundant in the nervous system and cell membrane. तो आप बोलते हो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे तो आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं होगा. ओके, सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिपिड इन द ब्रेन. सो वेरी abundant in the nervous system and cell membrane. Then ergosterol is a precursor for the synthesis of vitamin D, which is also one of the important complex lipid, ergosterol and other steroids. So steroids are synthesized from ergosterol. Even cholesterol is synthesized from ergosterol. Very very important, right? Next part you can see, this is known as a phosphatidic acid. This is known as a phosphatidic acid. phosphatidic acid क्या बोलेंगे, है ना. यू कैन सी दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल CH2CH2OH. तो यहाँ पे पहले COOR, यहाँ पे क्या है? एक फैटी एसिड है. COOR R2, यहाँ पे भी क्या है? एक फैटी एसिड है. बट CH2 लास्ट वाला जो कार्बन है, लास्ट वाला जो OH है, उसके यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट है. तो फॉस्फोलिपिड, दैट्स व्हाई, है ना, फॉस्फेटिडिक एसिड. तो इट इज अ ईस्टर ऑफ, है ना, C1C2 में R1 R2 मतलब C1C2 ऑफ ग्लिसरॉल इज स्ट्रीफाइड विद द फैटी एसिड. यहाँ पे फैटी एसिड है, यहाँ पे फैटी एसिड है, और यहाँ पे क्या है? फॉस्फोरिक एसिड. तो फॉस्फोरिक एसिड इज देयर. तो फॉस्फेटिडिक एसिड. देन नेक्स्ट आता है फॉस्फेटिडिल कोलिन. क्या है? फॉस्फेटिडिल कोलिन नोन एज अ लेसिथिन. फॉस्फेटिडिल कोलिन नोन एज अ लेसिथिन. फॉस्फेटिडिल कोलिन नोन एज अ लेसिथिन. बस यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पे बेस डाल दो. कौन सा बेस? कोलिन बेस. इट विल बिकम अ फॉस्फेटिडिल कोलिन. फॉस्फेटिडिल कोलिन और also known as a lecithin. lecithin में क्या है? फॉस्फोलिपिड फाउंड इन द मिल्क. फॉस्फेटिडिक एसिड को ही बाद में कोलिन बेस अटैच किया जाता है. सो फॉस्फोलिपिड मतलब क्या है ना, esters of fatty acid with the phosphoric acid with the additional
बेस, नाइट्रोजनस बेस, दैट इज अ कोलिन, कोलिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका सेफेलिन, सेफेलिन मतलब क्या, फॉस्फेटैडिल इथेनोलोमाइन, फॉस्फेटैडिल इथेनोलोमाइन। तो देखो फॉस्फेटैडिल, फॉस्फेटिक एसिड जो है ना, फॉस्फेटिक एसिड इसे यहाँ पे लिखना है, बस यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है इथेनोलोमाइन ना, ये क्या है, इथेनोलोमाइन, CH2CH2NH, तो इट इज नोन एज अ सेपेलिन, फॉस्फेटैडिल इथेनोलोमाइन नोन एज अ सेपेलिन। देन फॉस्फेटैडिल इनोस्टॉल, फॉस्फेटैडिल ना, इनोस्टॉल, इनोस्टॉल मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखो फॉस्फेटैडिल कोलिन मतलब क्या है, यहाँ पे फॉस्फेटिक एसिड में कोलिन लगा दिया, बन जाएगा लेसिथिन, यहाँ पे फॉस्फेटैडिल है ना, फॉस्फेटिक एसिड में इथेनोलामाइन लगा दिया फॉस्फेट के ऊपर, बन जाएगा सेपेलिन। और ना यहाँ पे फॉस्फेटिक एसिड के यहाँ पे एक इनोस्टॉल डालने हैं, ये शुगर है तो साइक्लिक शुगर इनोस्टॉल, तो इट विल बिकम अ फॉस्फेटैडिल इनोस्टॉल, राइट। नेक्स्ट में क्या है, फॉस्फेटैडिल सेरीन, सेरीन मतलब ये अमीनो एसिड होता है सेरीन, तो सेरीन लगा दो, बन जाएगा आपका फॉस्फेटैडिल सेरीन, है ना। देन यहाँ पे होता है प्लाज्मिनोजेन और फॉस्फेटैडिल, है ना। यहाँ पे एक जब एक फैटी एसिड रिमूव किया जाता है तो ये बन जाता है प्लाज्मिनोजेन। देन नेक्स्ट होता है ना, कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन का स्ट्रक्चर ये है, कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन का ये स्ट्रक्चर है। तो टू फॉस्फेटिक एसिड मॉलिक्यूल, देखो आपने देखा है टू फॉस्फेटिक एसिड मॉलिक्यूल, दे आर ज्वाइन टुगेदर, फॉस्फेटैडिल, है ना, टू फॉस्फेटैडिल मॉलिक्यूल दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लिसरॉल नोन एज अ कार्डियोलिपिन, है ना। कार्डियोलिपिन क्या है, इट इज अ ओनली एंटीजेनिक फॉस्फोलिपिड, ओनली एंटीजेनिक फॉस्फोलिपिड, कार्डियोलिपिन। देन नेक्स्ट आता है स्पिंगोमाइलिन, नेक्स्ट इज अ स्पिंगोमाइलिन, 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 है ना। यहाँ पे भी क्या है, स्पिंगोमाइलिन में डबल बॉन्ड है फैटी एसिड में, and when it is connected with the amide known as a ceramide, you can see over here, देखो यहाँ पे है ना, लेसिथिन R1R2R फैटी एसिड, in the lecithin R1R2R फैटी एसिड, this one is a glycerol part, CH2CH2, यहाँ पे क्या है, एक फैटी एसिड है, यहाँ पे क्या है, एक फैटी एसिड है, यहाँ पे फॉस्फेरिक ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, कोलिन है, तो लेसिथिन, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। Now phospholipase enzymes which metabolize the phospholipid, phospholipase क्या होता है, enzymes which metabolizes the phospholipid, so site of action of phospholipase A1, साइट यहाँ पे phospholipase A1 एक्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, साइट ऑफ एक्शन ऑफ phospholipase A2, यहाँ पे phospholipase A2 ब्रेक डाउन करेगा, ना साइट ऑफ phospholipase C, यहाँ पे phospholipase C एक्ट होगा, एंड phospholipase D कहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे। तो फॉस्फोलिपिड्स आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम नोन एज अ फॉस्फोलाइपेज, तो उसके टाइप्स होते हैं, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज A1 A2, फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज डी, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज A1 कहाँ पे एक्ट होगा, फॉस्फोलाइपेज A1 विल एक्ट ऑन दिस पोजीशन, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फॉस्फोलाइपेज A2 ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फॉस्फोलाइपेज है ना सी, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फॉस्फोलाइपेज डी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, in case of phospholipids, so phospholipids are broken down by phospholipase, right? Now सेपेलिन का स्ट्रक्चर है फॉस्फेटैडिल इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिक एसिड मतलब क्या, CH2OCOR1, यहाँ पे फैटी एसिड है, यहाँ पे फैटी एसिड है, और तीसरा जो कार्बन है किसका, ग्लिसरॉल का, दैट इज कनेक्टेड विद द फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड है एंड कनेक्टेड विद द इथेनोलामाइन, CH2NH3 मतलब इथेनोलामाइन, तो फॉस्फेटैडिल इथेनोलामाइन is known as sapelin, and phosphatidylcholine, phosphatidylcholine is known as a lecithin, phosphatidylcholine is known as a lecithin। नेक्स्ट देखो इथेनोलामाइन प्लाज्मोजन, इथेनोलामाइन प्लाज्मोजन, तो यहाँ पे इथेनोलामाइन प्लाज्मोजन मतलब है ना, है ना, तो है ना, फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन जैसे कि वैसे लिखना है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है,
CH2 double bond CH, then R1. That is a phosphate ethanolamine plus imagine. Then sphingomyelin, sphingosine क्या है, अल्कोहल है, sphingosine is alcohol. So this one is a sphingosine alcohol ना. एक लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है, लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड अल्कोहल, OH CHOH लास्ट में अल्कोहल है, तो अटैच्ड विद द है ना. उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप एंड देन कोलिन एंड यहाँ पे फैटी एसिड रहेगा स्फिंगोमाइलिन. दिस वन इज नोन एज प्रोस्टेनोइक एसिड, साइक्लिक फैटी एसिड होता है प्रोस्टेनोइक एसिड, 20 कार्बन एटम, कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर 20. तो साइक्लिक फैटी एसिड 20 कार्बन प्रोस्टेनोइक एसिड, इससे बनता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स. दिस इज अ प्रिकर्सर फॉर PG. प्रोस्टेनोइक एसिड इज अ प्रिकर्सर फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स. Prostaglandin F2, structure of prostaglandin F2. So again you can see over here where phospholipids can act. Phospholipid कहाँ पे एक्ट होंगे? Phospholipase A1, it will act on this place. Phospholipase B, so substitute for lysine. ये phospholipase A2 यहाँ पे एक्ट होगा, phospholipase C यहाँ पे एक्ट होगा. Phospholipase मतलब क्या है? फॉस्फो मतलब फॉस्फोलिपिड एंड लाइपिड मतलब ब्रेक डाउन करने वाला, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स है ना. फॉस्फोलाइपेज डी विल एक्ट ऑन दिस प्लेस. ठीक है, दिस इज द स्टेरॉइड न्यूक्लियस ना. तो अभी लाइव में कोई नहीं है, सो विल स्टॉप हियर, विल सी द रिमेनिंग पॉइंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. लाइव में कोई नहीं आ रहा है, खत्म हो रहा है लाइव ना. आपने इसमें तकरीबन 40-50 बच्चे हैं, दे आर नॉट कमिंग लाइव ना. अगर किसी को नहीं चाहिए तो फिर मुझे क्या है, पहले